Start our presentations, and as already I mentioned that this conference was on transforming power and water sector infrastructure basically. So in this session we'll know basically what is the power sector, and in this conference power was focused, and no doubt in hydropower water is related to power. So how India is going to transform this power and water sector in coming days? So that is one of the important thing that we actually don't know what is the power scenario or what is our near future. So we'll know in this session, and we'll know how India is thinking that this infrastructure should be developed immediately, because we all know this thing. We all know that what is the requirement of power and how hydropower is generated. And even one lecture was on dam projects. I think Migo Basar was there to tell something about hydropower and dam projects. So these basic things already you know. This in this workshop, in this session, we'll know how we are going to transform the scenario of Indian scenario in the coming days, and how it can be performed better in coming days. That thing we will discuss. So one new word is here, PSP. Can anybody tell what is PSP? Dam we know, dam means hydro dam. What is PSP? This is a new term for you. Or it is related to hydro. Pump storage project. Pump storage project, yes. So pump storage projects, in the by name you now know that there will be storage, and from the storage the water will be pumped. Normally in hydro dam, we normally don't pump our water. Water comes and we know how hydropower generates. But this power, this water in the outlet, if we can pump again, then what will happen? That we have stored it, then again we pump it. So when it will benefit it, normally what happens in the power scenario, in the whole 24 hours, we don't need same type of power, or we don't have same demand of power for the whole 24 hours. There may be some, in some point, maybe in the around 8 p.m., maybe peak point, and maybe in the morning 2, 3 a.m., the lowest, then tariff is determined like nowadays like that. So power company sells the power in time slot. If demand is more, then their price will be high. Suppose at 8 p.m., your price may be 12 rupees per unit. And in the night, 12 p.m. or in 2 a.m., that price may be 2-3 rupees per unit. So that such type of difference is there. And again, what happened? We are using you will know, we are using thermal power at present around 50%. We are using thermal power. And in thermal power, what happens? You have to run continuously. It is not that at around 8 p.m. you have suppose power generation of 100 megawatts suppose for unit. Then in the morning also the same you will, because it is continuous process in thermal unit. So in that case, the thermal company has to sell the power. They must to sell, and where power will go. So that power is very less. Price is very less. So with that power, we can uplift our water to the storage, upstream storage. And that water during peak time in hydropower, that is the facility. You can generate your power as per your desired period. So if you need power at 8 p.m., so you will start at 8 p.m. You don't need power at 2 a.m., so you'll stop it. And we will buy this power with less price, and then we will uplift it, that water. So by 2 rupees, you will uplift, then you will generate the power and sell it at higher price.
So that type of thinking is there. And in that way, already in the developed countries, that has already happened. So India is also thinking like that. So in the coming slides, we'll know about these things. So this is the power scenario in the country at present. So what is the in the lower portion you see installed capacity at present? India has a installed capacity of 475 gigawatt. Okay, and 50%, 50.5 is from fossil. Fossil means that power is from thermal power. Non-fossil is only 49.5. So we are mostly depending on thermal power. And there are a lot of disadvantages in thermal power. So that thing is another new chapter. So India's thermal power, we are thinking to reduce, in globally it is reducing, the thermal power generation is globally reducing. So then where we have to go? We may go to hydropower or we may go solar power. That two options are there. So for India, wind is a limited capacity, and biomass, these things are new things coming, but majority we have two options, solar and hydro. So India at present only using 10% from large hydro and 1% from small hydro. Now nowadays from solar, we read that from solar we are getting 23%. So if we reduce our thermal power generation, then we may go for our solar power generation or we may go for hydropower generation. So India is moving like it ahead. So if you go to next slide, now India is this is the proposed capacity of by 1932, 2032. Okay. So 2000, what scenario sense? We will generate solar power around 40%. Then we will generate through small hydro there will be increase, and this thermal will be reduced. So this is the India proposal at present up to 2032. So we are reducing basically, here you see we are reducing basically this coal or thermal power, and we are increasing the solar power. But you will see in the next slide that there is disadvantage in solar power also. So in that line we are going. So this is the Central Electricity Authority National Electricity Plan for generation point of view. So here you see there is two terms, PSP and BES. PSP matlab this pump storage project. So we are going to generate through PSP. That figure you have seen up to 29, 30 and 31, 32. Then there is the BESS. BESS, I think, battery enabled solar system. So we are increasing the power by two ways. One is through PSP, means already you know, and through BESS. So up to this point, I think you clear how India is moving ahead. So India is focusing on PSP and BESS, not on normal our hydropower plant or what we are doing at present. Now this is the something you should know. So what is the advantage of PSP over battery storage? BES means battery storage. So there is difference between this in life, replacement, resource availability. So if you see, PSP is nothing but one kind of hydropower plant. So in here you know that our civil sets are 100 years. But in battery storage, the battery lasting is only 10 to 12 years. So again, if in case of replacement, this is a civil structure. So no replacement required during project life, but battery requires
as it is, life is 10 to 12 years. So every 10 to 12 years, you have to replace the battery. Third point is important point, resource availability. So India has natural resource. Abundant availability in India means this PSP means hydropower. So we have water availability is there in India. But in case of battery storage, we have to import it from, it's like America, China, like this, because you have to import the key minerals. So if you compare this PSP and battery storage in coming days, we must improve PSP more. At present, we are focusing on battery, but this battery problem is there. This problem you now seen, that you have to replace it, then you have to buy it from other country, you have to manufacture in other country. So other things are there. In by cost at present, they are saying it is similar. But when their discussion, a lot of discussion was there in the workshop, then it is emerged that the cost is high in case of battery storage. They have informed like that. Here it is written similar. If you say 7 number point. So, and this is important point, environmental hazard. So in hydropower, we know that there is no environmental problem. But in case of battery storage, there is a lot of environmental problem. So these are the things from this table. You know now that PSP is better than battery storage. In case of battery storage, we have no role because we are from water sector. But in case of PSP, we have a lot of role because in coming days, we are moving ahead through for PSP. So how government has changed a lot of rules to PSP, for PSP to develop as early as we can develop this PSP. So these are the thing need for PSPs. Now you know these things actually, that there is a need of energy, and there is a good PSP is a good option. So these things you know, there is a lot of slides, so I am moving ahead. So these are the one again slide. What is the PSP status in the country, in India? So we have PSP potential around 200 gigawatt, and we have already commissioned 4.7. So in case of PSP, we are developing very less. You see, we have potential of 200 gigawatt and we have commissioned only 4.7. But now India, there will coming slide, you will know how India is changing the scenario, and this within this new scenario, we will develop it immediately. This PSP will develop in India, and in coming 4-5 days, 5 years. These are the PSP at present commission, that 4.7 gigawatt. Basically, these are in 2 in Maharashtra, 2 Telangana, then Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat. So no PSP at present is there in Northeast or in Brahmaputra basin. No PSP is commissioned, but there is some PSP we will know, we under survey and investigation. So these are the PSP under construction. Those were the, here also you see, there is no PSP under construction in Northeast. So we have in Tehri is the important at present under construction. Then in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra. So these are under construction. So these are some yet to construction, yes, yet to start construction, but already concurred by authority. One important Turga PSP is there in West Bengal. So these are the list of those PSP. These are the list state-wise PSP list which are in survey and investigation. And here you see that Maharashtra, Andhra Pradesh, in that belt, there is the most importance is there. Ask that question in the conference also, that there is no PSP in the even in survey and investigation. No commission, that is okay. But at least in the survey and investigation says there should be something reflected here. But they inform that at present they are this, because you see in the next table sector wise, if you see these PSPs are being developed by private
sector. So around 70%, 75% being commissioned or being studied by private sector. So they are preferring this belt because these companies, this infrastructure are there. So they are focusing on basically Andhra Pradesh, Maharashtra. So they inform us that once this is the very easy for a company to develop this type of PSP in this stage for their compatibility. They are now there, but in coming days, no doubt this they will come to our northeast also, and they will develop PSP in northeast also. So that is the important point for us because we are preparing master plan. We are preparing a lot of new, maybe in coming days DPRs. So for us, it is very new one. Even I or we don't know that how PSP is being developed in other states. But they are developing this, and this is very fast mode. In case of normal our hydro dam, we know our projects like Kulsi, Noading, they are national projects. Even after being these projects are national projects, they are not being even completely approved by Government of India after 20-30 years. But this thing will not happen in case of PSP. So they will prioritize, they will approve the things all in time, and there will be timeline. So PSP will be developed in a very professional way. What is happening in hydropower? Why we are not generating hydropower? At this moment, hydropower generation is very less because there are a lot of things. Because takes a lot of time to prepare the hydropower project DPR, then for commissioning. So this thing is being handled by Government of India separately in case of PSP. So these are some slides I am to show. So this is the from this year to 31-32. So Government of India has already these are timeline. So how this total megawatt will be generated from 26 to 31-32. So Government of India targeted this thing, and they are going like ahead. So this is the PSC, how they have started. So Ministry of Power issued guidelines to promote development of PSP very recently in 2023. So from 2023, the scenario has changed. Earlier, there is a lot of problems in preparing DPR and getting approval from various agencies. Now, after these guidelines, these things become very easy. So these are some administrative financial initiative for PSP, and this statutory clearance for PSP required, and Government of India have a lot of policy. And finally, in this year, new policy has developed, new National Hydropower Policy 2025. So basically, for this development, they have a lot of policy, and we will not go through these policies. But now we know that there are some policies through which we can generate this PSP as early as we can do. They have simplified this environment clearance, forest clearance process also. Earlier, this was very difficult to get this environment clearance, forest clearance for a hydropower projects. Now, this process is simplified by Government of India, issuing through various process, through various notifications. They have done this thing. So this is now the expectation that from state they will support for development of PSP. From centers, they will expedite the approval for DPR, and from developer, they will engage the experienced consultant for PPR. Means this DPR will be prepared in a very fast mode, and they will be executed in a systematic or in a more professional way. That's how India is moving ahead. Now, the next point is in the conference, it was discussed why our already developed, whichever we have already developed hydro dams, because PSP is nothing but one kind of hydropower dam. But in case of earlier cases in hydropower dam, the most critical investigation is a geological investigation, because everything above this surface, you know everything. You can design everything and you can check it,
you know everything. But below the surface means the geology. Geology is the very important thing for hydro dam. And in earlier cases that happened, that due to poor investigation of geology, the this type of projects takes a lot of time, because if geology investigation is not proper, means your design will be not proper. And once you started work on a project, and you will see that your geology is something different what was earlier investigated. And in that case, already you have awarded the work to some contractor, big contractor. But you have seen there is we call it geological surprise. But in the near geological surprise, in the name of geological surprise, a lot of project getting problem for execution in India. So they are thinking that how we can reduce this, or how we can remove this problem. So one thing is that we should go for proper geological investigation. So there was a presentation from a geologist in geological survey of India, and they have presented this why investigation required. This thing, for stability, safety, durability, and technological viability, we need the investigation. And here geology is a major guiding factor. So in planning stage also, in the dimension of the structure also, mean design, for location of the structure, in every point you need to know geology. So how geology affect these things, some pictures these are there, that due to geology what may happen. Suppose this 1 2 pictures are there, sinking of ground or failure of dam. These things happens due to wrong investigation in geology. So they emphasize that we should go for proper investigation in geology. If you don't investigate geology properly, you will get a lot of problem in case of tunnel. When you construct tunnel, that is the challenging. If you know the geology, there are a lot of instruments, systems are there, but you must know the geology. Once you understand the geology, you can use your machines, and you will able to do all the tunnels. But if their geology is not properly investigated, this type of problems comes in case of tunnel. So this thing geologist has suggested that we should do the geological investigation properly. That emphasis was there in this workshop. And this is one standard section of a in the above you see the dam, then the conductor system, and here is the powerhouse is the below you see this powerhouse. So in this system, in every point you must know the geology, from starting from the down from dam point to pump house point, through all the penstock area. So geology investigation is one of the most important you can say problem also, because it is very difficult to investigate properly. Those nowadays everybody is going retired. So in our earlier days, they were involved in this type of things, geological investigation. They go for drill holes and they do these things. But there is limitation is there, how much drill hole you do. So that thing happens in case of, in coming slide we will know. You suppose you are doing drill hole around 100 meter apart or 200 meter apart, but in between this drill hole there may be a weak zone, and this happens in case of dam, and there from that this problem arises. So what is the solution for that? So India is thinking on this, that if this we can solve this problem, this geological investigation, then it may cut a lot of time for proper execution of dam projects. So for that purpose, what type? This is the those who involved in this exercise. They know this is the borehole logs through which we use to determine the strength of the rocks. So this is the earlier system. This system is still going on. But what is the latest system? We'll discuss on this. This is the geophysical survey. So in this workshop, they suggested that we must do
this, or we may start with this geophysical survey. Already NSP, there was a professional from NSPC, NTPC, and they have already started this type of work. In our case, we have not done so much geophysical work. Whatever I have known for Kulsi Dam, we have a Kulsi Dam project, Noading project. In this projects, we have not gotten detail for geophysical survey because this is also new one. This is only developing stage. There are a lot of various options also which geophysical survey we should go. So there needs some expert also to understand the result of geophysical survey. This type of things are there. But now India has developed these things. Even NSPC was saying that they have a dedicated team for geophysical survey because they have stressed it very. They are saying that in every dam now they are going for geophysical survey. You may go for bore locks in earlier case, but first they will go for geophysical survey, then they will go for this borehole things. So in the next slide, we will know how these geophysical studies are carried out. So this is the geophysical techniques. So some of the techniques I am discussing here, then Bhaskar will also come. He will also some slide. So how many have heard about geophysical studies? So I think we should take some break, means we should discuss something. And some of you already started sleeping. So for others, that's that's sleeping is a virus also. One sleeps na, then second one also it goes like a virus. So if we don't discuss anything, then one by one the virus will go. So we should discuss something so to break our monotony. So from online, anybody want to discuss? Because I don't know how many has already slept in online. So if anybody is alert, we may discuss something, or otherwise we will discuss offline here. 2 points I want to discuss here. One is, has anybody heard about geophysical techniques? If anybody want to discuss from online, anybody? Sir, Yes, yes. I want to know the pumping procedure. How pumping procedure follow in And this? we are also discussing this thing. Pumping event, they are saying, suppose throw a penstock, the water will come to the lower side, means is in lower reservoir. Okay. This Yes, sir. so there will be some generator to means this Generated generator electricity. house. Generator Yes. house. This generator's house will be converted to pump house. They will flow Acha. back the water to upper reservoir. Okay. Acha. So thank you for discussion. Yes, this type Thank of you. discussion will be done. Then how it is happening. So this is the technique they are using. Is it not, Bhaskar? So they are using the same. This pipeline means you can say this penstock or pipeline, whatever you word say. Same line, same. This generator house will be converted to pump house. So when water will come from up to down, the power will be generated. When you have to uplift it, then you will use as a pump. So this type of techniques are there. Okay, sir. So in Thank that you, sir. in that case also you will need power, but as I have already said, those power will be the low cost power मीन्स वैसे बोला 2-3 बजे सुबह उस टाइम में आपका बहुत सस्ता में पावर मिल जाएगा, तो उस सस्ता वाला पावर से वो पाम को ऊपर कर देगा पानी को, और जिस टाइम पानी को चाहिए उस टाइम वो चलाएंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ टीएसपी. थर्मल पावर नहीं कर सकते, हाइड्रो पावर कर सकते हैं. हाइड्रो पावर क्या कर सकते हैं, आपको जिस टाइम चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन क्या है आपका पानी को उस टाइम में ना वो पंपिंग वाला जब सिस्टम नहीं होगा, आपका वो पानी आप चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे. यहाँ पर पानी को भी बाहर निकलने नहीं दे रहे. और आप और एक क्वेश्चन था सर.
जो जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन जो ओएनजीसी व ऑयल सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है क्या, वही सिस्टम है क्या? हाँ हाँ, वही है वही है। इवन हम लोग का प्रोडक्शन में भी इधर यूज किया। हम लोग का ग्राउंड वाटर जो हेडक्वार्टर में हम लोग का पानी का लेवल कितने में है, तो हम लोग का प्रोडक्शन में इधर यूज किया है। आप अच्छा। साइड चले गए जो हम लोग का तो आपको पता ही, आप भी सब डिवीजन में था, गुवाहाटी सब डिवीजन में, यहाँ का पानी हाँ का सर। है। हाँ। तो पानी का लेयर जानने के लिए हम ब्रह्मपुत्र बोर्ड हेडक्वार्टर में भी इस सिस्टम को यूज किया है, जियोफिजिकल सिस्टम को। और हमने उसी से हम लोग को निकाला जाए हम लोग का पानी का लेयर कहाँ है। थैंक यू सर। मतलब ये सर PSP, what is a circulation process, Circulation that process. reusing of water. Reusing of water. In case of scarcity of water, Yes, yes. that is used. That is why these regions, like in western region, Yes, yes. these are all drought like Yes, yes. area. That is Their area is like that. yes, sir. But in case our area is not focused here, because we have sufficient water is coming. That, Already we have capacity for hydro dam. yes, sir. And power requirement is there. Demand is also there. Yes, sir. So there are various reasons. That's why it is not started in our region. But in case of already in Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, they are just going for PSP. So every power project is on now focused on PSP. Cost-wise also, that will be more beneficial, I think. This PSP, sir. PSPs are beneficial. Beneficial, yeah. That's why Cost-wise, it is being used. Because, It is being started. no reservoir maintenance and all that. So then we start our. Thank you for online participants. From offline, anybody want to discuss? हाँ बताइए। Yes, yes, good question. So Saloi has one question. What is difference between geotechnical study and geophysical study? Anybody from you want to answer? मतलब सर सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल। Yes, yes. मतलब रॉक ग्राउंड वाटर स्टडी ऐसा बताइए। So you are in the, this is not the exact answer. Anybody want to answer what is the difference between geotechnical study and geophysical study? So anything from online also, anybody want? And we have got in our studies also, but at that time geophysical technology was not so popular. And now due to advancement of software and this electronics, this is now in the fast mode, and now it is being used in everywhere. So in coming days, Brahmaputra board has to be used this geophysical technique. It is already now all compulsory in the earlier other projects, in hydro projects. So in coming days, we must go for geophysical physics. Means that you will go for geotechnical analysis, but you have to go for geophysical studies also. So what is the difference between geotechnical? डिस्कस मत करो, सुनो जिसको इसको सुनना है, जिसको नहीं सुनना है वो तो शांत रहो। तो जियोफिजिकल और इसको तो पता है, अभिनव को तो पता है। अभिनव बताओ ना, जियोफिजिकल और जियोटेक्निकल मन में तो कुछ आ रहा है? हाँ नहीं, वो डिस्कशन से नींद उड़ेगा तुम्हारा दोस्त लोग को। नहीं तो मैं बकते जाने से वो मोनोपोली बोल रहे ना, मोनोपोली। सिंपल है, मैं मन में जो आ रहा है IT का लिंक है। हाँ 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 हाँ। यस यस। और जियोटेक्निकल में क्या निकलेंगे? मीन्स दोनों का रिजल्ट लगभग सेम ही हो सकता है। दोनों का टेक्निक और प्रोसीड्यूर पे डिफरेंस है। एक नंबर जियोफिजिकल में जो है ना, उसको आपको बहुत मतलब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप कोई वेव्स ऊपर से डाल देंगे, उसका रिजल्ट जो आएंगे
उससे आप इंटरप्रिट कर पाएंगे कि हम लोग का बिलो द सरफेस क्या है। वो सॉइल भी हो सकता है, वो रॉक भी हो सकता है, इवन पानी भी हो सकता है। तो जैसे मतलब इसको लग रहा था इफ्ती कार को जे सॉइल के लिए नहीं है, सॉइल के लिए भी है, मतलब कोई भी हो सकता है। अंदर में सॉइल है, पानी है, जो भी है, लेकिन आपको बहुत छेड़छाड़ करना नहीं, वो आपका ऊपर से करेंगे। और जियो टेक्निकल में लेकिन आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे वो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और जियो टेक्निकल वो भी लगभग सेम ही होता है। जियोलॉजी मतलब आप बोरहोल करो, उसके अंदर से आप सैंपल्स लाओ। सैंपल से दो तरीके से दे सकते हैं, एक जियोलॉजिकल एंगल से दे सकते हो, मतलब जियोलॉजिकल एंगल मतलब टेक्सास फिशर्स ये सब का रॉक का जो है वो जियोलॉजिस्ट देखते हैं। और जियो टेक्निकल मतलब इंजीनियर्स क्या देखते हैं, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका कोहेशन वैल्यू कितना है, उसका फ्रिक्शन क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, ये सब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है। तो जियो टेक्निकल मतलब हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो तीन वर्ड हो जाता है, जियो फिजिकल, जियोलॉजिकल, जियो टेक्निकल। जियो फिजिकल में हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, कोई ड्रिल होल नहीं। जियो टेक्निकल में ड्रिल होल करना ही पड़ेगा, और जियोलॉजिकल में भी ड्रिल होल करना पड़ेगा। तो जियोलॉजिकल का जियोलॉजिस्ट अपना एंगल से देखते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स देखते हैं। तो हम अभी ये बोल रहे थे, अभी तक हमने जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल वो कर ही रहे थे, मतलब हम ड्रिल होल करते ही है, कोई भी हाइड्रो डैम जाएंगे तो हम ड्रिल होल करते ही है, और ड्रिल होल करके सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, जैसे निहारे में उसका टेस्टिंग होता है। लेकिन जियो फिजिकल बहुत कम कर रहे थे। अभी क्या है, इंडिया उस लाइन में चला गया जो हम स्पीड अप करने के लिए दो रास्ता है, एक तो स्पीड अप हो जाता है, जियो फिजिकल बहुत कम टाइम में हो जाता है। दूसरा है कि आपका जो जियोलॉजिकल सरप्राइज, जियो टेक्निकल तो पर्टिकुलर पॉइंट में जाएंगे, जैसे मैं बताया 100 मीटर डिस्टेंस में गया वो गया। इसमें क्या है, आप पूरा प्रोफाइल ले सकते हैं, पूरा एरिया का आपका एक एक मतलब पिक्चर आ जाएंगे, इवन 3D पिक्चर भी हो जाता है। तो 3D में आप एक मतलब जनरेट कर सकते हैं जो आपका एरिया का सरफेस का नीचे कैसा है, कहाँ पर कौन सा सॉइल, किधर कितना रॉक, कौन सा वीक जोन है, क्या है, सब कुछ निकल के आ जाता है। वही है जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी। तो जियोफिजिकल टेक्नोलॉजीज मतलब वो वही, अभी तो स्टार्टिंग में वही लिखा है इधर, कितना हम लोग का कैपेसिटी है, कितना हम लोग को करना चाहिए, इसलिए हमें जियोलॉजी में स्टडी करना चाहिए वो तो उसमें जियोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वही लाल वाला ही है इधर। The advanced geophysical techniques can be very helpful in assessment of subsurface condition in faster and economic way. This is the main point. Other thing जो मैं अभी तक बोल रहा था वही चीज में लिखा हुआ है। और इसमें अलग अलग, जैसे अभी अभिनव ने बताया था, अलग अलग मतलब वो टेक्निक है। टेक्निक में एक नाम दिया है रेजिस्टिविटी इमेजिंग इमेजिंग ERT, एक नाम दिया सिस्मिक रिफ्लेक्शन टोमोग्राफी, एक नाम दिया सिस्मिक टोपोग्राफी, देन एक ये सब और नया है MASWGPR। दीज आर सम टेक्निक्स, जिस टेक्निक के कारण थ्रू टेक्निक से हम लोग ये करते हैं। इसमें टेक्निक में हम लोग को इतना जाना नहीं है, क्योंकि हमें तो बस रिजल्ट चाहिए, हमें बस आइडिया होना चाहिए क्या है। तो एक तो ये रेजिस्टिविटी टेक्निक ये है, जो आपका जो इसमें कुछ जैसे अपने पिक्चर में देखा होगा, कुछ वायर एंड इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, तो वो सब हम लोग लगाते हैं थोड़ा दूर दूर में। तो उसके बाद हम उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो ट्रांसफर करेंगे, तो इसका रेजिस्टिविटी अलग अलग है, अलग अलग लेयर्स का। तो उसमें इस साइड में लिखा है ग्रेनाइट, बासाल, ये अलग अलग मार्बल, सब अलग। तो ये सब कौन कैच करते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ये जो पहले तो सेंसर होना ही पड़ेगा, सेंसर उसको सॉफ्टवेयर को दे देते हैं। और आपके लिए इतना सब, वो तो जियो फिजिक्स वाला जानेंगे, फिजिक्स वाला जानेंगे, आपके लिए सिंपल है, आपका जो सिस्टम लगा देंगे, उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर से एकदम डायरेक्ट इधर आ ही जाएंगे, तो आपका इधर कौन सा एरिया में क्या है आपका डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी सब टेक्निक है, टेक्निक आपको बस थोड़ा जानकारी के लिए सही है। और लेकिन मेन पॉइंट है कि आप ये इलेक्ट्रोड थोड़ा दूर दूर में लगाएंगे, उससे वो रेजिस्टिविटी जिस हिसाब से आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपका स्क्रीन में। तो इस टाइप का कुछ स्क्रीनशॉट इधर लिखा हुआ है, जैसे एक स्क्रीनशॉट नीचे देखा होगा आपने, कुछ स्क्रीन आ गया 2D स्क्रीन। तो इसमें कलर कोड से, कलर कोड क्या है बाद में छोटा छोटा और क्या भी लिखा है, तो कलर कोड से एक तो पता लगेगा किस एरिया में कितना रेजिस्टिविटी आ रहा है। और ये रेजिस्टिविटी किस चीज का है, मार्बल का है कि बासाल का है कि वीक जोन है कि मतलब ये क्या चीज है, सब कुछ उससे लिंक्ड है।
वो साइड में लिखा रहता है। तो आपको मतलब इससे पता लग जाता है अंदर में क्या है। तो इस सम पिक्चर है, जैसे इस पिक्चर में आप एक टनल बना रहे हो, ठीक है, डाइवर्सन टनल है, एक ब्लैक लाइन, लंबा सा ब्लैक लाइन देखा होगा, ये टनल है। तो ये टनल जब जा रहे हैं, ये तो दिखा एक वीक जोन मिला है इसमें। तो वीक जोन इसमें मतलब वो जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन से एक अभी क्या है, जब आप ड्रिल होल बनाएंगे, हो सकता है ड्रिल होल उससे पहले इसके बाद ड्रिल होल आ गया, उस पॉइंट में ड्रिल होल नहीं आया, तो आपको मतलब देखने में ड्रिल होल में ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जब टनल बनाएंगे वहाँ कोलैप्स हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत जगह में हुआ है, इंडिया में ऐसा बहुत जगह हुआ है। तो इसीलिए अभी जो फोकस कर रहे हैं जो हम जियोफिजिकल स्टडी बहुत अच्छे से करना चाहिए। जियोफिजिकल स्टडी करके उसको कंफर्म करने के लिए जियोलॉजी भी करेंगे, क्योंकि ये भी एक, इसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स है, ऐसा नहीं है जो सब एवरीथिंग इज 100% ओके, प्लस माइनस सब सिस्टम में रहते हैं। लेकिन इससे आपको लगभग जानकारी मिल जाता है जो आपका सॉइल अच्छा है कि खराब है, या आपका वीक जोन कहाँ है। तो इसीलिए इस ट्रेनिंग कोर्स में भी हमें वही बताएंगे कि हम अभी जो इनकमिंग मतलब प्रोजेक्ट्स में हमें उसको यूज करना है, और अभी कर भी रहा है। हम लोग के इधर ज़्यादा यूज नहीं हो रहा जिसमें बताया, क्योंकि हम लोग तो अभी डैम इन्वेस्टिगेशन भी बहुत कम कर रहे हैं। शायद अभी हम जैसे हम लोग का सीनियर इंजीनियर्स और जेईस, वो लोग डैम इन्वेस्टिगेशन किया है, वो लोग खुद फील्ड में जाके जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया है। तो उनको जैसे अंजनत है, अंजनत से भी सुना था, वो भी गया था। ऐसे हम लोग का अभी भी कुछ इंजीनियर्स है, सीनियर इंजीनियर मतलब जेई से जो अभी प्रमोशन होके AE ये लोग एक्चुअल फील्ड में जाके जियोलॉजिकल स्टडी किया है। लेकिन उनके लिए भी, उनको भी पता लगेगा कि हाँ रियली हम लोग जब जियोलॉजी कर रहा है तो कुछ पंच में कर रहा है। तो वो वाला चीज अभी वो कवर अप हो गया, जो जियोफिजिकल इतना आगे आ गया जो आप जियोफिजिकल करो। तो बेसिकली स्ट्रेस ये है जो कमिंग डेज में हमें जियोफिजिकल स्टडी करना है, कोई भी हमें वाटर जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जाना है। तो इसमें एक एग्जांपल लिया था पोलावरम प्रोजेक्ट। तो आप लोग को शेयर करना चाहते हैं, पोलावरम प्रोजेक्ट में मैं भी था, इसमें मैं गोदावरी रिवर में था। तो बहुत लोग को पता है मैं भी इसमें ब्रह्मपुत्र डिजाइन दे के दूसरा डिपार्टमेंट में था। तो उस टाइम में यही पे था, पोलावरम प्रोजेक्ट में ही था। तो ज़्यादातर टाइम में उस टाइम इधर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ये गोदावरी रिवर में आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी मतलब मैं जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में पार्ट था, इस काम में ही पार्ट था। तो वो मैं शेयर समाज के, तो शेयर समाज नॉर्मली जियोलॉजी ये जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते थे। तो मेरा उधर पोस्टिंग था, मतलब टेम्पररी पोस्टिंग। तो उसके बाद उस टाइम भी उधर मतलब वो जियो फिजिकल वही एग्जाम्पल इधर दिया था। ये सब मैं करते हुए देखा है, मतलब वहाँ पर मतलब वो लोग कर रहे थे, हम तो अपना ड्रिलिंग में ही था। लेकिन एक जियो फिजिकल टीम था जो कर रहे थे, और वहाँ पर भी वही वो लोग ने क्लियर पिक्चर हो गया। तो वो एग्जाम्पल दिया कैसे ऑलरेडी हमने काम किया है। तो उसी एग्जाम्पल एक ऐसे दो तीन बहुत एग्जाम्पल अभी खासकर भी दिखा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसके थ्रू ये दिखाया गया है जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है ना बहुत ही अच्छा है, और उसको करना चाहिए, उसको प्रमोट किया गया था मतलब। तो इस टाइप का है। नेक्स्ट आ गया रिफ्लेक्शन टोमोग्राफी, ये सिस्मिक वाला है। तो इसमें क्या है, वो पहले में था कितना रेजिस्टिविटी था, इसमें आएंगे पी वेव वेलोसिटी डाल देंगे। तो पी वेव वेलोसिटी से वो सेंसर से कैच करेंगे कितना वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटेड तो सिस्मिक वेव से लिंक है, तो उसको नाम दिया सिस्मिक मेथड। तो सेम टेक्निक है आपके लिए, तो वेव गया या इलेक्ट्रॉन गया क्या गया उसको आपसे बहुत मतलब नहीं है, लेकिन ये मेथड्स अलग अलग है। फाइनली आपको वही सीन मिलेगा। तो इसमें वो कुछ टेक्निक्स अलग अलग है, इंडा फील कैसे करते हैं, जैसे कैसे वेव को भेजते हैं, वो सिर्फ क्या किस टाइप का मतलब वो वायरलेस डाटा कलेक्टर या वायरलेस चीजें उन लोग जियो फोन यूज करते हैं, वो सब चीजें थोड़ा सा दिखाया वो लोग ने। लेकिन फाइनली वही आपको वो इस एरिया का एक 2D व्यू मिल जाता है, जिससे आपको पता लगता है ये आप रजिस्ट्रेबिलिटी लिंक करो या पीएफ से लिंक करो, आपका नीचे में कौन सा पॉइंट में कौन क्या मिनरल्स है या आपका रॉक है, सॉइल है, सब कुछ पता लगता है। ये इस टाइप का एग्जाम्पल्स हमें बहुत दिखा है उधर। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ से ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके इधर ले लिया। ये एक
अरुणाचल प्रदेश का ये काम है जिसमें ये काम किया है। तो मतलब ये है कि हम लोग का भी इधर आ गया, बोर्ड में नहीं हुआ, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि एनएसपीसी एनटीपीसी ये सब निप्पो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो वो लोग यूज कर रहे हैं अभी। तो एक सिस्मिक टोमोग्राफी बोल के एक आया है नया से। सिस्मिक टोमोग्राफी बेसिकली ये तो ऊपर पे देते हैं। सिस्मिक टोमोग्राफी मैंने देखा बेसिक ज्यादातर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोर होल्स है, सपोज आपने जियोलॉजिकल सर्वे कर लिया बहुत जगह में, लेकिन आपका होल सही और या टनल आप बना लिया, उसके बाद भी आपको क्लियरिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको तो कंप्लीट तो पिक्चर है नहीं, जहां पर हमने जियोलॉजी के लिए बोर्ड लोग बनाया था वहीं पर ही मतलब आपका वैल्यूज है। तो उसमें क्या करते हैं, वो जो होल्स है, होल्स में टनल्स में ये लोग कुछ मतलब सेंसर, ये कुछ मतलब पीयूएफ का वो डालते हैं, ग्राउंड से नहीं, उस होल से। तो वहां से भी जब आएंगे मतलब तब भी एक पिक्चर आ जाता है। उस टेक्नोलॉजी को उसने ये नाम दिया टोमोलॉजी, सिस्मिक टोमोलॉजी। तो उससे आपका एक पूरा पिक्चर और क्लैरिटी आ जाता है। तो इस टाइप का एक एग्जांपल दिया, जैसे इसमें कुछ बोरहोल लिया उसने, टीएच मतलब ये होल है कुछ, तो उसमें वो लोग सेंसर डाला है, सेंसर या जो वेव जनरेटर है ना उसको डाला है। तो वही चीज मतलब उनको डाली, ये तीस्ता में किया है। तीस्ता का ये भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, तीस्ता का है। तो उन्होंने वही पिक्चर ले लिया। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि सिस्मिक टोमोग्राफी हो, आपका रेसिस्टिविटी हो या सिस्मिक रिफ्लेक्शन हो, कोई भी मेथड यूज करिए, आपका जो ग्राउंड का पूरा पिक्चर आज का डेट में इतना मतलब इतना डेवलप हो गया कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का कमिंग जो डेज है ना, उसमें आने वाला है, उसमें ये यूज होगा अगर हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, जो ऑलरेडी बाकी पे कर रहे हैं। अभी फाइनली मेरा एक थोड़ा सा ये है, मतलब ये तो हो गया जो इंडिया का अभी पावर सिनेरियो क्या है, उसमें पीएसपी को कैसे फोकस कर रहे हैं, और पीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए जियोलॉजी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वही हिंड्रेंस था। ड्यू टू दिस जियोलॉजिकल सरप्राइज बहुत प्रोजेक्ट डिले होता है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जियो फिजिकल टेक्निक लाया और उसको प्रमोट कर रहे थे, इसको यूज कीजिए, इसको यूज करके जल्दी जल्दी काम कीजिए। दूसरा है कि ये एक नया एक चीज हम लोग को बताया कि हम लोग ये हम लोग थोड़ा सा कर भी रहे हैं। सेकंड जो ये वाला चीज, ये वाला एंगल ये है कि ये हम लोग पहले से मतलब पहले जैसे हम लोग बोलते थे डीपीआर बनाने में इतना टाइम लगते है, सर्वे करने में इतना टाइम लगते है, तो उस चीज को हम टैकल कर सकते हैं किससे, ये सब वर्ड ये डिजिटल ट्विन डेस्क स्टडी, ओपन सोर्स डाटा, जीआईएस, एआई। तो इसको हम अभी यूज कर रहे हैं। अभी जैसे जीआईएस हम लोग का इवन हाइड्रो पावर का डीपीआर अलग है, इवन एंटीरियोजन का काम करने में भी हम लोग पहले बहुत सर्वे स्टेशन में टाइम लगे थे, क्योंकि हम रियली पता नहीं था। तो जब से हम लोग का जीआईएस आया, अभी एआई स्टार्ट हो गया, स्पेशली हम लोग का ये अभिनव ने गूगल आर्ट इंजन रिसेंटली डेवलप हुआ है, ये सब चीजें आ रहा है, जिससे कि हम लोग का जो कमिंग डेज में बहुत कम टाइम में हम लोग बेसिक स्टडी तो हो ही जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा फोकस किया है, जो आप अभी जब पीएसपी में जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो इस चीज को यूज करना चाहिए। बेसिकली एआई, एमएल, डिजिटल ट्विन अभी बताएंगे थोड़ा सा नींद तोड़ने के लिए। अभिनव, ये वर्ड हमने भी पहली बार सुना था, क्या है डिजिटल ट्विन? कोई दिखी है तो हम लोग मॉडल में हाँ 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 हाँ। तो डिजिटल ट्विन बोल रहा है मतलब सब में यूज कर सकते हैं। डिजिटल ट्विन मतलब मीनिंग है मॉडल। तो आप मतलब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट का, अभी आपके पास बहुत कुछ जाता है। पहले पहले हमें कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो वहां तो पहले जाना है, फिर सर्वे करना है। ये जो लोग इस टाइप का काम किया है, हम लोग का सीनियर्स लोग, उनको पता है। हम लोग तो बहुत आराम का जिंदगी जीते हैं, मतलब मैं और मेरे पीछे में जो आया है, कभी हमने वो जंगल में जा ही नहीं पाया। मतलब एक बार दो बार वो जियारल कुलसी से देखने के लिए गया, काम के हिसाब से वो भी घूमने के लिए, लेकिन एक्चुअल इंजीनियरिंग तो उस टाइम हुआ था। लेकिन उसके बाद हम लोग का एक गैप हो गया, लेकिन लकीली क्या हो गया, अभी बहुत चीजें आसान हो गई, जरूरत ही नहीं जाने के लिए। अभी पहले पता नहीं था। जैसे हम लोग सियांग डैम प्रोजेक्ट हमने, जैसे हम लोग सीनियर लोग बताते थे
सियांगडम प्रोजेक्ट के लिए जब स्टडी करने गए थे या सुबनसिरी के लिए, उस टाइम उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं था, कोई मोबाइल भी नहीं था। ये 90 का बात है, मतलब हम लोग का 82 में बोर्ड हुआ, उसके बाद ही स्टूड हो गया। तो उस टाइम में, उस जमाने के बोल रहा हूँ, मतलब उस टाइम हम लोग का लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ है। उस टाइम हम लोग का सीनियर यही बोल रहे थे, जैसे बरगुआई सर मेरा बॉस था, तो वो लोग 10-15 दिन का खाना एक साथ लेके चलते थे। और उनका बैच, मतलब नेक्स्ट बैच जाते थे, मतलब उसका ऐसा होता है। तो मतलब वो लोग स्टार्ट किया, 7 दिन के बाद उसका सेकेंड बैच, इंजीनियर का बैच नहीं, खाना वाला बैच। क्योंकि ये लोग तो जाएंगे 7 दिन का वो खाना रहेंगे, वो बाकी 7 दिन उसके 15 दिन रहना है उसको, बाकी नेक्स्ट बैच बांटने जाते हैं उसका। और कभी कभी ऐसा भी हुआ, उनका क्या है, जो खाना आ नहीं पा रहा है, ऐसा बहुत बार हुआ है, खाना आ नहीं पा रहा है, उनका खाना खत्म हो गया, तो उन्होंने जंगल में जो मिला, मांकी हो, सुअर हो, जो मिला उसको मारा और खाया। तो उस टाइम से ऐसे काम करना था। अभी वही बोल रहे थे, वो जमाना गया, उसका जरूरत नहीं है। क्यों? हम लोग के पास सैटेलाइट पिक्चर्स है, अच्छा अच्छा रिजोल्यूशन का सैटेलाइट पिक्चर्स है, हम लोग के पास डीएम है, फिर हम लोग के पास जीआईएस आ गया, उसको क्लैप करो, फिर उसके बाद अभी एआई आ गया। तो अल्टीमेटली ये सब बनाएंगे, आप लोग क्या बनाएंगे, ये डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन इज नथिंग बट मॉडल ऑफ दैट एरिया। तो उसको ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। So what is a digital twin? A digital twin is a partial representation of an object or system designed to reflect of a physical object accurately. वही में मतलब पहले तो हम भी समझा नहीं, क्या फर्स्ट टाइम हमें भी लगा, फिर मैंने तो फिजिकल मॉडल तो बनाते ही रहते हैं तो ये बताना, सिंपल से बताना से हो जाता है, मॉडल है तो ठीक है, सिंपल आसान भाषा के लिए तो मॉडल है। तो उसको लिए हम लोग का मतलब पार्शियल बेसिकली। अच्छा, मॉडल का भी दो डिफरेंस होता है, जैसे हम लोग का फिजिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल, ऐसा ही ये पार्शियल है। इसमें मतलब मॉडल मतलब फिजिकल जैसे से बनाना नहीं है, तो पार्शियल ही बनाएंगे। पार्शियल में सबसे आसान तरीका तो हम लोग अभिनव ने सिखाया है, गूगल आर्ट इंजन। उसमें सब कुछ डाल दो, वहां पर ही आपका डिजिटल ट्विन बन जाएगा। क्या डिजिटल ट्विन बनेगा कि नहीं गूगल आर्ट इंजन में? हाँ, ये तो बोल रहा है बन जाएगा। तो आपको बनाना है फ्यूचर में, फ्यूचर में आज नहीं। तो वाई पार्शियल, पार्शियल तो मतलब बोल रहे थे अभी उसका इतना कैपेसिटी है, जो फिजिकल जितना आप देख पाएंगे उतना ऐसा ही पार्शियल में काम करेगा। तो पार्शियल में आएंगे, तो पार्शियल ट्विन बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ये थोड़ा सा जीआईएस लाइन में आ गया, जो हम थोड़ा सा आइडिया है। जैसे ऑर्बिट जोन से हम लोग का ये जो भी मीडियम ऑर्बिट, ये जैसे यहाँ से हम लोग को डाटा मिलेगा। फिर हम लोग को सबसे मतलब ऑलरेडी कुछ कुछ मतलब लेयर जनरेट होके रखा है, जैसे स्नोमेल हो, एनडीवीआई हो, सोलार हो, ये सब अलग अलग सैटेलाइट से अलग अलग लेयर बना के दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लेयर्स हम लोग का ऑलरेडी है ही। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में क्या क्या है, ये भी थोड़ा सा आप लोग का जानकारी है, जो जीएस लाइन में है, जैसे लैंडसैट सीरीज, मोडी सीरीज, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स का सीरीज है। और जो लोग अभी जीएस करना शुरू कर दिया, ये सब यूज करते हैं। फिर हम लोग का यूरोपियन यूनियन का ये सीरीज है, सेंट्रल लाइन का 1 2 3 तक आ गया। और अभी रिसेंटली एआर के लिए 5P आ गया, हालांकि शायद 5P हम लोग को बहुत जरूरत नहीं है। तो जो भी है, ये यूरोप का ये सीरीज है। फिर चाइना ने भी अपना सीरीज डेवलप कर लिया। और चाइना का सीरीज अभी तो हम लोग इंडिया इतना यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूरोप और यूएसए का यूज कर रहे हैं, और इंडिया का खुद का अभी अब जो है। तो इसमें IRS, कार्टोसेट सीरीज और रिसर्च सीरीज, ये सब यूज हम लोग पहले तो हम लोग इसी को यूज करते थे, जब जीएस पहले था ना, हम तो इंडिया वाला ही था। उस टाइम यूएसए और सेंटिनल ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि उसमें जो इंटरनेट फैसिलिटी, ये सब इतना फ्री सॉफ्टवेयर ये सब कम था। लेकिन जैसे भास्कर लोग ज्वाइन किया था ना 2005 में, मैंने देखा था JSL में, तो उन्होंने सब इंडियन सेटेलाइट में ही खरीद कर काम किया था, वो भी प्रोक्यूर करके। उस टाइम तो मंदिर था, हम लोग शू टू खोल के जाना पड़ता था। अभी तो विद शू के विदाउट सी हाँ, आप लोग ने वो सीन दिखा नहीं, मतलब भास्कर अंदर बैठते रहते हैं, हम लोग थोड़ा सा जूता वोटा खोल के कभी कभी तो नहीं, ऐसा जमाना ही था। मतलब उस टाइम मतलब वही सेंसिटिव चीजें था, लेटेस्ट मॉडल था कंप्यूटर का। तो लेकिन अभी जमाना है कि सब अपना अपना कंप्यूटर में सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी लेकिन ये मंदिर को दोबारा जो रिनोवेशन हुआ, अच्छा हुआ। तो एक एनवायरमेंट सही है जो भी है इंडिया का। लेकिन मैं ये देख रहा,
इंडिया का जो सैटेलाइट यूज पहले ज्यादा था, क्योंकि मैंने देखा था ये लोग मतलब सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट यूज करके। आजकल तो मैक्सिमम अभी जो जीएस लोग यूज कर रहे हैं, हम भी सब तो क्योंकि इजीली एक्सेस होता है। लेकिन इंडिया ने अभी इसको फोकस किया है। अभी उन्होंने अपना अपना, हाँ, अपना अपना वेबसाइट डेवलप किया ताकि इजीली एक्सेस हो जाए, अलग अलग नाम दिया है, तो ये भी आसान है। तो हमें यूएसए और यूरोप तो है ही, इंडिया का डाटा भी बहुत आराम से मिल रहा है, तो उसको डाटा हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया जो गूगल अर्थ इंजन। ये अभिनव ने हमें सिखाया एक लेक्चर में, हाउ टू यूज और हाउ टू स्टार्ट विद गूगल अर्थ इंजन। तो इसमें ये प्रमोट किया गया है जो गूगल अर्थ इंजन में अभी जितना भी लेयर्स है, जो था पहले अलग अलग मतलब वेबसाइट, अलग अलग सोर्सेस से हमें लेना पड़ता था, वही सब डाटा अभी गूगल अर्थ इंजन में है। तो वही उसमें ये शायद वापस से आया था, तो वापस वाले ने उसको प्रेजेंटेशन किया था। हम मतलब ये डेस्कटॉप स्टडी है हालांकि, लेकिन इस डेस्कटॉप स्टडी में आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिलता है एज ऑन डेट। तो उसको वही मतलब अलग अलग लेयर्स को उसने कैसे लिया, एलिवेशन, फिर रिजर्व मैनुअल। फिर उन्होंने ये बताया कि आप वहाँ पर वहाँ तक अभी अभिनव को जाना चाहिए, लेकिन अगर मन है तो एक दिन जरूर जाएंगे, मेरे को मतलब लगता है आप पूरा डैम प्रोजेक्ट को उधर बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि डैम प्रोजेक्ट में क्या चाहिए आपको, कितना मतलब आपका बैंक हाइट, मतलब डैम हाइट होगा, वो तो कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो कंट्रोल है ही उधर। तो आपका डैम का लेंथ कितना डिपेंड करेगा, वो गॉड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डैम लेंथ, हाइट सब कुछ ऑलरेडी है उधर, तो आपका डैम का साइज जो है ना उधर मिल जाता है। फिर अगर जियोलॉजी का एक लेयर मिल जाता है, आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितना डेप्थ तक उसको खुदाई करना है। मतलब पूरा डैम का कंप्लीट साइज आपको गूगल अर्थ ही दे देंगे। तो अगर इस एरिया में आप डैम बना रहे हो, इस एरिया में उसका जियोलॉजिकल लेयर ऐसा है, इस एरिया में इसका टोपोग्राफी ऐसा है, तो वो उस टोपोग्राफी में और उस जियोलॉजी में आपका डैम डिजाइन होकर दे देगा। तो आपका तो लगभग इतना होगा, और 99% तक सही होगा, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन को मिला है। वो इवन वो ट्रायल एरर करके भी देंगे, ये आप इतना स्लोप देंगे तो इतना, स्लोप देंगे तो इतना, तो वहां तक पहुंच गया। तो आपको वही मतलब एक गूगल अर्थ इंजन में क्योंकि सब कुछ लेयर है ही, तो उसको आपको साइज मिल गया। और जो बाकी जो चीजें हैं जो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोज मेन डैम में आपको अगर कॉस्ट मिल गया, तो उसके साथ जो आपको पावर हाउस का कितना होगा, क्योंकि उस वाटर फ्लो का एक एनालिसिस वो लेयर मिल जाएगा, इस रिवर में कितना वाटर है, कितना डिस्चार्ज है, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। नो डाउट ये डेवलपिंग स्टेज में है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो रिवर में कितना फ्लो डिस्चार्ज आ रहा है, वो डिस्चार्ज सेशन उनका बिल्कुल लिखा है। नहीं, डिस्चार्ज सेशन अगर दूसरे में है, गूगल अर्थ इंजन ही बता देंगे। अगर आपका उस पॉइंट में डिस्चार्ज नहीं है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में है, तो वो कैलकुलेट करके निकाल के दे देंगे। तो आपको डिस्चार्ज मिल गया, तो मान लो आपको पावर मिल गया। आपका पावर हाउस कहाँ बेस्ट फिजिबल है, क्योंकि टोपोग्राफी तो पूरा उनके पास है ही, तो बेस्ट फिजिबल मतलब साइट फॉर पावर हाउस वही निकाल के देंगे, क्योंकि सब इनपुट इनको इन्फॉर्मेशन है, उनको तो इन्फॉर्मेशन है ही। तो आपको उसी से मतलब जब सब मिल गया, मतलब आपका पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। नो डाउट इसको डीपीआर नहीं बोल सकते हो, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोल सकते हो। तो वो बोल रहा है इस टाइप का फिजिबिलिटी करना स्टडी हमें करना चाहिए। हम लोग इवन इस टाइप का फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए बहुत टाइम लगा लेते हैं अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, क्योंकि हमें डैम का साइज पता करना, हमको टोपोग्राफी करना, वो करना बहुत टाइम लगता है। तो वही वाला चीज जो ये गूगल अर्थ इंजन एक प्लेटफॉर्म है, इस टाइप का अलग अलग चीजें अभी निकल के आएंगे जो डिजिटल टावर बना देंगे, मतलब आपका डैम का मतलब एक मॉडल बना देंगे। हालांकि आप कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आपने बस टारगेट किया जो इस पॉइंट में मुझे एक डैम चाहिए। आप बस इंफॉर्मेशन को कहीं कहीं अगर कमी है तो उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। वो वहां पर आपको एक डैम क्रिएट करके एग्जैक्टली कहाँ पंप हाउस हो गया, पंप हाउस क्रिएट करके उसका कॉस्ट बड़ा निकल कर कंप्लीट उसको चीज निकाल देंगे, जो उसको ही बोल रहे हैं डिजिटल ट्विन और जो मॉडल है। तो उस लाइन में हमें जाना चाहिए अभी धीरे धीरे। तो उतना ही था तो हमें मतलब इस प्रोजेक्ट, इस कॉन्फ्रेंस में वही मतलब फोकस किया था कि आने वाला दिन में हमें मतलब आगे कैसे हमें अगर इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है,
किस एंगल से देखना है। तो बेसिक टेकअवे 3 है। एक तो है कि हमें पीएसपी की तरफ जाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने जो बोला कुछ स्टेट ने ऑलरेडी आगे बढ़ा, तो हम लोग को पास भी वो पीएसपी वाला से धीरे धीरे आना वाला है। नहीं आया तो फिर भी हम लोग को जो हाइड्रोडम वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको पीएसपी का मॉडल में जाना पड़ेगा। मतलब कैसे टाइमली उसको डीपीआर बन जाए और उसका एग्जीक्यूशन हो जाए, एक था वो। दूसरा है कि जे आप कोई भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट करो, आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करो, और बेसिकली फोकस किया है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसमें उन्होंने बोला स्टेज दिया थे आप जियो फिजिकल का यूज करो, उसको कर आगे चलो। और थर्ड में ये जो आपका फिजिबिलिटी स्टडी बोल सकते हैं उसको, जो फिजिबिलिटी स्टडी इस टाइप का जो गूगल अर्थ इंजन आ रहा है, इस टाइप का स्टडी करना चाहिए जिसमें कम टाइम में आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा आपका प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसी के साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबको। कोई क्लैपिंग कर सकते। बताइए, ऑन कर लीजिएगा तभी राइस को ऑनलाइन वाले को पता लगेगा। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये हम अगर डैम की बजाय अगर हम पीएसपी पे जाते हैं, सपोज मिनिस्ट्री का अगर गाइडलाइन फॉलो करके, अगर सपोज पकड़ लीजिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड को ही बोल देते हैं कि आप लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सर्वे इन्वेस्टिगेशन, ताकि मतलब कुछ अगर जितना हो सके 2-1 प्रोजेक्ट पीएसपी मोड में ले लीजिए। हाँ। तो उसमें सर आपका मतलब मतलब स्टेप कैसा होगा? जे प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बना के देना पड़ेगा पहले, जैसे कि गूगल पीएसपी में मैंने बोला ना, पीएसपी में आपने दिखाया हुआ था, अभी 75% प्राइवेट कर रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग नहीं, डायरेक्ट कंपनी, और डायरेक्ट कंपनी मतलब कंपनी डायरेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कंपनी करेंगे। तो जैसे हम पहले गवर्नमेंट एजेंसीज करते थे ना, वो प्राइवेट को दिया दिया, तो उस पे पीएसपी में मैक्सिमम जा रहा है प्राइवेट में। गवर्नमेंट मतलब पहले गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ था, पीएसपी गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रहा है उसको प्राइवेट के थ्रू करने के लिए। तो वही क्वेश्चन मैंने पूछा था, नॉर्थ ईस्ट में करने के लिए क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ही बोला जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसको आसान चीजें इधर मिल रहा है, महाराष्ट्र कर्नाटक जो भी दिया है, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ सोच नहीं रहा है, उससे आसान इधर है। अलग अलग एंगल है, यहाँ पर लो ऑर्डर सिचुएशन हो, यहाँ पर एक डैम बनाना जाए, पीएसपी बनाए जो बनाए, क्या क्या इशू हो सकता है, लॉ ऑर्डर सिचुएशन, वो सब चीजें है। फिर एक वो ये भी बोला है जे इधर जियोलॉजी से, यहाँ का जियोलॉजी से वो लोग उस साइड का जियोलॉजी अच्छा है, मतलब जियोलॉजी तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन वो लोग बोल रहे थे वो जियोलॉजी वो अच्छा है। तो ये सब पॉइंट्स है जिसके कारण से अभी हम लोग का इधर काम हो रहा है, लेकिन स्टार्ट होगा, वो लोग का बोलने का ये बहुत जल्दी उसको स्टार्ट होने वाला है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लगभग ज्यादातर टॉपिक रंजित डेका कवर कर ही लिया है। मैं अभी वो एक मतलब प्रेजेंटेशन था, ये एनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एजुकेशन ऑफ विथ एडवांस जियोफिजिकल टेक्निक्स। वो अभी जो रंजित डेका बोला है उसका कंटिन्यूशन ही होगा। इंट्रोडक्शन था, लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्मार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। यहाँ चैलेंज भी होता है, लार्ज स्केल स्मार्ट प्रोजेक्ट लाइक पावर एंड वाटर सेक्टर, डैम, पंप, स्टोरेज प्लांट्स, हाइड्रो पावर सिस्टम, they are very complex and capital intensive. This project often face delays, cost overrun, and even failure due to inadequate understanding of subsurface conditions. Traditional investigation methods, boreholes, test pits are localized and may miss certain heterogeneity, leading to uninformed decision making at the feasibility and DPR stages. The opportunity.
Modern geophysical planning provide non-invasive, cost-effective, and spatial continuous surface data. When incorporated early during feasibility studies and DPR preparation, they significantly improve site selection accuracy, risk forecasting and mitigation, design optimization. Like in this picture, this borehole are done, but that one portion that got missed. Mapping geophysics, these are pre-feasibility and feasibility studies, early screening and risk identification. It is purpose is to determine whether the proposed infrastructure is viable in terms of geology, groundwater, seismicity, slope stability, and construction project. How geophysics helps? Rapid, non-invasive recognition of large area. It identifies major geological features, define depth of the bedrock, select also in selecting optimal alignment. Technique commonly used are electric resistivity imaging, seismic reflection and MASW, remote sensing, magnetic and gravity. Objective is to provide a high confidence design ready surface data, purpose supply engineer planner with accurate geotechnical and geohazard data for structural design and excavation planning. How geophysics helps? Generate 2D but 3D surface models, identify foundation condition, map fractures, seepage pathway and construction headers. Refine borehole and drilling location for maximum information gain. Indication work in conjunction with geotechnical data, enhance engineering judgment and design optimization. It ensures adherence to design, verifies subsurface condition during and after construction. Purpose validate the ground behavior that the ground behave as predicted and no major anomalies arises. How is geophysics helps? Seismic and GPS ground penetrating radar for checking compact and concrete qualities. ERT and SP to detect leakage or water movement in dams. Time-lapse geophysical monitoring to detect evolving ground behavior. Using third-party audits to verify contractor claim or design conformity. Special use cases, detection to avoid behind tunnel lining, concrete structure audit to detect for defect like honeycombing, rebar and thickness mapping in concrete structure. Why use geophysics? It is low cost, non-invasive, rapid coverage, continuous information, optimization of drill holes, minimization of surprises, risk reduction, early stage application, better planning and smooth execution. These are the geophysical techniques: electrical resistive imaging, seismic reflection and seismic tomography, ground penetrating radar, multi-channel analysis of surface wave, passive seismic topography, hydrogeophysical tools. Electrical is done like this. Some electrodes are placed in the soil and calculation on that details I have not this they get it in meter and then combo with computer it get analysis. From this we get the profile like this. This red are good and here some fault line is there.
which need some other type of treatment. And seismic reflection tomography is then where some geopoints are placed and in it, it shows some sound wave are created. This sound wave behaves like this and it gives the soil characteristics. This reflection tomography results are plotted like this. We get a 2D map like this. And ground panic radar are they use like this in concrete. We get result like this. In tunnel also we place ground DPR and the condition of the tunnel get challenges, subsurface uncertainty causing design challenge, change, delay cost overrun. Limited or geophysics is early planning stage, fragmented integration like this way. Budgetary hesitancy and lack of also among decision makers because mandated geophysical screening interior for feasibility and DPR consultants promote multi-method geophysical intersection, first course validation, integrate geophysics with GIS, BM, and AI tools for better design insight, build institutional capacity and standard operating procedures. Way forward. Position geophysics as a mainstream planning tool, not just diagnostics. Develop policy level framework to institutionalize its uses, sanction collaboration between planner, designer, and geophysics. Advanced geophysical techniques offer a powerful opportunity to enhance infrastructure outcome by reducing risks, optimizing design, and improving auditability. It specializes in proactive data informed project development. Thank you. Tahin. Importance. No. Meticulous plan. Another topic what we were हम लोग को जो दिखाया में वो है meticulous planning for project. Importance of PFR माने pre-feasibility report, DPR and meticulous planning over. Or to develop a project can be classified in three stages. Project PFR and DPR for or conceiving and planning. Implementation, execution, erection, commissioning. Operation stage is operation and maintenance. Rule of 5. Neglecting essentiality to spend ₹5 during PFR, DPR or planning stage will force you to spend ₹25 during construction. Likewise, skipping any construction activity to save 5 will result in a ₹25 expense during operation and maintenance. Cutting corner early, माने इसका मतलब है guarantee is 5 times pain later. मतलब 5 times बाद में pain होगा उसको. What is pre-feasibility report?
Initial assessment to examine viability, broad techno-economic analysis, major component of PFR, project location, water availability, power potential studies, feasibility layout option, power evacuation infrastructure, initial cost estimate and financial viability. Objective of PFR, decision to invest or not to invest in DPR preparation. Take of PFR first screening. Early risk identification, investment confidence, foundation for securing regulatory approval before time, timely submission of the proposal for subsurface exploration and proposal for in situ biolab test to CA for appraisal and finalization. Timely application of terms of reference to Ministry of Environment Forest and CC climate change through Poribesh portal facilitated state and DISCOM buy-in. What is DPR? Comprehensive document for investment decision for project development. Used for providing TC by CEA, CWC, oblique statutory bodies, basis for tendering GBR and project execution. Objective of ADPR, accurate planning and design, reduce technical uncertainty, clarity during tendering stage, efficient resource mobilization, avoidance of cost and time overrun. Major component, topographical survey, hydrology and water availability, geology and geotechnical investigation, layout, civil structures, EM and HM equipment, power evacuation infrastructure, construction methodology, financial and economic analysis. Major component of DPR, pre-DPR chapters, general layout, hydrological aspect, power potential studies, geological aspect, construction material and geotech, interstate aspect, transmission layout, foundation engineering and aspect, dam barrage design, gate design, hydel civil engineering, EN design. Requirement power approval mandatory before submission of DPR. Approving authority maybe CEA, CWC, GSI, GSMRS, etc. Aesthetic divisions. The remaining DPR chapters, cost estimate, allocation of cost, economic evaluation, construction program, project organization, environmental aspect, future utilization of buildings, recommendation. Approval not mandatory before submission, to be reviewed during concurrence. Included in final DPR submission to CEA. Critical issues, underestimating subsurface conditions, like already Ranjit Deka has said, extensive parallel topographical survey is required, which can be helped through geophysical exploration, complexity, select land that avoid forest areas, heritage, historic sites, mark disposal planning, etc. Miss or inadequately addressed areas, weak power evacuation or water distribution planning, EPC-centric approach, overlooking constructable and site logistic. Inherent challenge, inadequate wildlife, economic sensitive zones, forest land, frequent changes in law and guidelines for project development. In specifics of PSP, issues of pressurized monetizing of ancillary facilities,
limitation number of holes in the forest areas, connectivity to nearest polling station. This is not our polling station where electricity is connected to grid. Limitation of number of boreholes. Horizontal investigation reliability capping of 25 number of boreholes should be sensitized to MOEF. Maximum number of holes per 10 square kilometer are allowed as per guideline in this dated 2020. However, during DPSS, minimum number of holes required are usually more than 25 holes. For increasing the number of holes beyond 25, the user agencies shall apply for the evasion of forest area for seismic. These are required to make the DPR some. In view of the above, it is required to increase the minimum number of holes up to 45 to 50 in one project. In appropriate land assessment. In one of the project, one dumping yard was proposed. This is a case study that was shown to us. What was proposed by relocating one village. However, one small temple of archaeological significance exists within a proposed dumping yard location, which was missed during detailed project report stage. Entire village was regulated, compensation paid. However, dumping yard could not be used. Searching for an alternative yard impacted the project for 2 years time overrun. Lesson land due diligence is not just legal, it is historical, environmental, and cultural too. Key takeaway: comprehensive land assessment. Every proposed land parcel must undergo thorough due diligence to identify potential encumbrances. In addition to archaeological and historical landmark, wildlife habitat and corridors, forests and conservation-sensitive zones, security-sensitive areas, mythical, cultural, and religious significance. Underestimating surface and overground condition also lead to उसको काम प्रैक्टिकल काम करने में उसका प्रॉब्लम आता है. Misjudgment about complexities, weak power evacuation, EPC-centric approach, incomplete resource analysis, inadequate risk assessment, overlooking constructability and child logistics. Assess road, its size and gradient, bridge length, bridge strength, often ignored or underestimated. Material sourcing and availability, not properly assessed. Assess meticulous DPR preparation is not the power. It is where we can make or break a project. Case studies show that what you plan today saves years tomorrow. So we have to make the DPR as perfect as possible at the beginning. Thank you. So today we have now our chief engineer, sir. He is from project, sir. Can you tell something about our projects? In this session, we have discussed something about PSP. So we have seen there is no PSP proposal in Northeast. So, sir, can you say something on PSP project in Northeast? Thank you, Ranjit. It is not true that there is no proposal for PSP in Northeast. So we don't have pump storage project in Northeast, but our NEPU is planning for pump storage project in Northeast. Several numbers of pump storage projects already are studied.
One of them is our Kopili project. In Kopili project, two reservoirs are there. One reservoir FRL is 609 meter, and the other upper one is 725 meter. For pump storage, there should be one level difference. So best suited for pump storage project is the Kopili project. So in the pump storage project, during off time, when power consumption will be not there by the general customers or users. So during that time, actually what happens, water cannot be stored beyond the capacity of the reservoir. So automatically it will spill off, it will flow. So to reduce that, what it is done, that water is pumped from the lower reservoir to upper reservoir during that period, particularly at night, when there will be no necessity of electricity, because after 10, most of the users, they do not use. So light, they switch off. Sometimes in some people, they use, switch off the fans also, ACs also. So requirement of power during that time, particularly after 10, it is drastically reduced. So during that time, water is pumped from the lower storage, lower reservoir to upper reservoir. And when peak time is there, when power requirement is more, then power is generated from upper reservoir to, and water is again let to go to the lower reservoir. So that is the concept of pump storage. In Mizoram also, our study is going there. In Arunachal also. So many projects are under investigation and preparation of DPR, but I don't know how long they will be successful. But the best suited project is Kopili project, because already two reservoirs are there. So in preparation of reservoir or construction of reservoir, there will be no extra cost. So generation installed capacity also around 380. But our total in Kopili project, our total installed capacity from two reservoirs, 3 powerhouses, is 275 megawatt. But from pump storage project, it will be around 380 megawatt. So that is the concept of, but I don't have seen any pump storage still there. One pump storage is there in Purulia in West Bengal. So West Bengal government is very successful in operating that Purulia, but I did not have opportunity to see those things. So today, a very good presentation has been given. So I think after this training in Delhi, no? So it is a very useful one. DPR preparation is a very important stage in the project cycle. So DPR is prepared basically based on the data collected at site. So data collection accuracy should be very essential, because our most of the projects we have seen, so practically it doesn't match with the data. Sometimes you will see water is flowing, but the reservoir capacity is full. Sometimes some reservoirs are there, it never fills. And project is there, Gumti project in Tripura. I was once sent there for some study, but from inquiry in that area, the project authority told that water did not spill till that day. So that was actually wrong diagnosis was there, wrong survey and investigation was there. So survey and investigation is a very important part for the project success and operation, and also for business. And that's why always importance should be given in collecting the accurate data, particularly rainfall and discharge. It is very important for hydro projects. Our air projects, water resources also. So the site people should give more importance in collecting the accurate data. Then other stages will depend on this. Suppose if the power study is not accurate, if the water availability is not accurate, then the whole project will, suppose sometimes our water availability study will say that this much of dam is required. But after completion of the project, it will be seen that actually this much of dam was not necessary. Lower dam was necessary. So the
extra cost involvement is there and that becomes unviable. Makes most of the project becomes unviable due to wrong survey and investigation. So we should give special importance on survey and investigation and preparation of DPR in the initial stage. So other stage will depend on this stage. So I will not say much. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable remarks and comments and discussion. So with this, if there are any question, otherwise we can conclude our session today. Thank you all.